Hello, everyone. Let me have a quick tech check. Am I audible and visible? I think I am audible and visible. Isn't that? I think yes. Yes, I am properly audible and properly visible. So let's start with what we are having today. है ना? आज के अपने उसमें अब सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ कि क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहले कुछ स्पेशल बात करें तो वही है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है दैट इज अगेन समहाउ केम इनटू द न्यूज़ बिकॉज जो टारगेट है ये इन्फ्लेशन उससे मतलब आरबीआई के कंफर्ट लेवल से कम है दैट इज 2% और it is comfort level like 2% is comfort level that is 1.33. This is one news that we should look into this. Second one is इसरो से एक bad news आई है. Hello, I'm Miss of it. Right. So जो हमारा PSLV C62 launch था that actually failed and the third stage. So यहाँ पे थोड़ा सा worrying signs जो थे वो देखे गए financial liabilities and other चीजों की बात हो रही है. Then India USA that is Pax Silica है ना. This is another news जो relationship में कुछ नया इंडिया यूएस relations में कि भैया बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा. So finally that we get some particular good news. Then India Germany defense pact. This is another news. मतलब this is an agreement जो कि cooperation और co-development पे है defense के. Then 25 years of participation है and इंडिया ईयू का जो फ्री ट्रेड है उसको भी सपोर्ट करता है पर्टिकुलर ये कोएलिशन काइंड ऑफ थिंग एंड जर्मनी जो है वो राइस ऑफ प्रोटेक्टेनिज्म जो यूएस का है उससे भी उन्होंने कहीं ना कहीं एग्री किया है हमारे लिए देन ईरान यूएस ये दिस इज continuous and again in news then we got election code of conduct in the news again. Right. So this is because of Maharashtra poll election, जो civic body जो like वो है स्टेट के अंदर जो आती हैं उनके उसमें then सुप्रीम कोर्ट से दो तीन न्यूज आई हैं जो जानने की जरूरत है लाइक फॉर एग्जांपल बेंगलुरु सिविक इलेक्शन जो है राइट Supreme Court actually ordered a deadline for the Bengaluru civic election. Then Supreme Court also gave some particular Abu Salim case. Right. Yes. It questions about 25 years since arrest. Like why he's serving jail, and there is no particular truth in the case. And then the presidential references criticism. So former law minister Rashmi Kumar criticized the use of presidential reference to dilute the verdicts. So वहाँ पे भी Supreme Court ने कुछ ना कुछ बातें रखी हैं. Then we got another news. Rajasthan got one of the fully organic panchayat. Yes, Banwasa Kankar becomes Rajasthan's first fully organic panchayat. It's chemical free. It was a good news actually. Then animal cruelty and the law, like for example, Andhra जो है, आंध्र प्रदेश में जो रूस्टर फाइटिंग होती है, मुर्गे लड़ाने का जो काम होता
राइट, सो वो आया, सो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट, आंध्र प्रदेश गेमिंग एक्ट, इलीगल बेटिंग, लॉट ऑफ थिंग जो है वो वहां पे आई, सो दैट इज रूस्टर फाइटिंग, सोशल लीगल कह सकते हो इस इशू को। एंड द लास्ट वन इज द फेडरलिज्म, रीजनल पॉलिटिक्स, लाइक वो केरला का जो इशू है, जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट ओवर नेशनल लॉ स्कूल. Yes, they want a national law university. Then there is a like central state tension on GST as well. So these are the major news that we can see for the entire day, right? Yeah. So that is how the entire newspaper tells you. German Chancellor flying kite was not in my bingo card. Right. Okay. Well, he inaugurated the International Kite Festival in India. So he can fly kite, and Modi ji was helping him, right? And ठीक है, चलो, let's not joke. Let's start discussing. Okay. So these were the major news and major highlights for the today. I mean, आज का पेपर काफी वाइब्रेंट था, मतलब पढ़ने में काफी मजा आया. I hope you guys will also enjoy, because like for example, Iran and US tension. So according to situation, America was like, we will have a military intervention in your area if you will not uh, do the correct thing. And Iran was like, chal bhai aja. And then that was the news of the morning, last morning. By the end of the night, it was like, ki chal chhode yaar ladai jhagda, let's discuss. Let's sit on a table and sip a cup of top coffee and then discuss ki kya kar sakte हैं. So yes, like कुछ भी हो रहा है, होता रह रहा है. So let's start with one of the unfortunate news, PSLV C62. We discussed about it yesterday, how it's going to carry the tons of satellites and how it's going to have like impact our technology and it will help us. So that actually fails on the third stage. Yes, and it was a kind of no, no. Indian Express is also good. Without a doubt, Indian Express is good. So let's discuss. Third stage जो होती है, that is somewhere it failed, and overall it like trouble receiving data for the 12 minutes, and ultimately we lost it. The thing is कि it will actually burden the financial liability and question, because this is the second case of failure of PSLV C62. So कहीं ना कहीं इसरो को लेके चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेट होंगी, एंड अगेन वी नीड सम गुड साइंस रिसर्च डेटा, गुड पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से satellites on the sky so that we can actually capture things around here. So yeah, that is what ISRO is going to have. Now the another thing is कि retail inflation जो है वो जो comfort zone होता है, अरे comfort level होता है RBI के, and that is below that, so that is somewhere alarming, and uh, people and RBI is working on it. Now let's move to these two things. Iranians calling for negotiation after US threat to launch strikes. Yeah. Again, this is from the Trump, है ना? चाचा ट्रम्प का कहना है कि Iranians जो है, they called for negotiation after I told them that we will strike with missiles on your land if you are not going to stop killing protesters and etc. and etc. Right? Uh, so चाचा ने ये सारी चीजें बोली, and then the things started circulating. Now, जो outlets here for the talk, according to President Trump, the Iranian leaders called for the proposed negotiation after the Americans threatening to the military response, right, on the deadly crackdown against the protesters. Now, conditions of dialogue, जो डिस्कशन होना है उस मेन कंडीशंस जो हैं उनकी बात करते हैं. So the condition is Iranian foreign minister confirmed, this condition, the channel of communication remain open through the special envoy Steve Witkoff and intermediary country, that is Switzerland. So अगर ये दोनों चीजें सेट होती हैं with the mutual respect and free from threats
and dictates, then we can discuss the terms of negotiation. Now, जो efforts है mediation का, that was also somewhere कहीं ना कहीं पे सही भी है. Because of after parallel military warning, like USA was like, "कि dude, देखा ना what I did in the Venezuela, I can do the same in Iran," and Iran was like कि मेरे को क्या हो, मतलब वेनेजुएला समझेगा. I mean, last year July में ही you have seen what I can do, what we can do. Without a doubt, if America wants to try something like Venezuela in Iran, it's not going to be easy. Venezuela's opposition is somewhere was supporting USA, and Venezuelan public was again, Iranian public is also pareshan, but Venezuelans were also pareshan. But the problem is Iran is having two mutual enemies for now. If you'll see the history of Iran, na, starting from 1950, then 53, then 59, then again 79, then modern after 2000s, all of them are having two common enemies. One of them is USA, and another one is the established regime. Yes, they both are the enemies of Iranian people. And majority of people, they don't support either US or a regime. They don't support US because they know US is only interested in their oil, and they care nothing. And they have seen that several examples like Venezuela, Iraq, Libya, Syria, several places. And they don't accept a regime because regime is not working positively. I mean, inflation is approximate 70%. The currency value is dropping and it's on a free fall. So there are tons of things. So Iran and its invasion is not going to be a good idea for US. Second thing, Iran established missile power. They might not have the nuclear weapon, but they have good missile strike capabilities. And we have seen this in last year when there was a war between Israel and Iran. Iran was like कि तू तुम इधर आएगा तो मैं तुम्हारे जितने भी मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसिस हैं हम उधर टारगेट करेगा. So yes, negotiation can be the best thing, and negotiation is one of the thing which can actually lead to protesters and crack down ये दोनों चीजें. But uh, US might not want for negotiation because protest is on the one of the highest levels since what we can say 1979 Iranian Revolution, and US will be more than happy if the protest help dethrone the current regime. So फिर उनके लिए आसान हो जाएगा. So there are a lot of things, right? Yes. So यहाँ पे काफी कुछ है. Let's hope for the best कि ना full scale war हो, protesters की भी जाने ना जाएं, नारिन regime जो है वो भी समझदारी से वो करे. तो खैर ठीक है. किस तरीके से होगा, क्या होगा, whatever it is. But they call for negotiation according to Mr. Donald Trump. Now, India Germany signed a pact to show the defense and industrial cooperation. So on January 2026, India and Germany has decided to strengthen their strategic partnership during the official visit of the German Chancellor Friedrich Merz. It is one of the best particular thing happened in India. Let's hope for the best. We get safety German cars. Yeah, yeah, yeah. सो इसमें जो मेजर रहा मैं उसकी बात करता हूँ. सबसे पहले तो इकोनॉमिक टाइज लाइक बोथ द लीडर्स मोदी जी एंड चांसलर मर्ज, they both gave economic limitless ties in upcoming time. For example, they are going to collaborate, focus on strategic sectors like defense, space, semiconductors, AI, automobile, etc. Then they also go for defense industrial roadmap. This is one of the good news. Yes, they talk about the defense industrial roadmap. They it's like sign the joint declaration on intent, right, to develop a defense industrial corporation roadmap. This will focus on the co-development and co-production of a military hardware and simplifying the defense trade.
So this is one of the thing जो कि सही था. And then visa free जो permit है, transit है, उसकी बात करेंगे. But also like talk about the India EU free trade agreement. Yes, India European Union free trade agreement कि हम उसको किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं and we will support it. राइट. देन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ग्रीन अमोनिया डील है, ग्रीन एनर्जी फंडिंग है, राइट. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है where different kind of what we can say रिन्यूएबल एनर्जी, इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, ये सारी चीजें जो है की जाएंगी. So it was a kind of what we can say good visit. Apart from this, they talk about the educational roadmap, healthcare professions, and student visas. So it's education से लेके defense के अलावा economic ties, yeah, right? What we can say, technology, innovation, everything. So they had a good visit and they had good roadmap. Let's hope for the best. They came out well, and उसके बाद कुछ चीजें आए. Then there are particular two major highlights. One of them is Ariha Shah case, right? Shah case. Another one was Kite Festival. Yes, Indian officials continues to press for the return of Ariha Shah, uh, the Indian kid who was in German foster care. Like um, they're stating that it's a humanitarian issue that should be solved during the talk. Let's hope for the best. Let's come out with something. Then they also International Kite Festival जो है उसको इनॉग्रेट किया गया अहमदाबाद में with the cultural diplomacy, showing cultural diplomacy. So that was something जो कि इस visit में पूरा का पूरा देखने को मिला. So these were the two major news at the starting. So Iran, US, they are calling for negotiation, and India, Germany signing pact on defense, industrial, economic, education, visa, medical, and different sectors for their cooperation. Right? Yes. Then moving on to the next news. Uh, this particular news about the Umar Abdullah and NLU in Jammu Kashmir. Right? Yes, the Jammu Kashmir Chief Minister Umar Abdullah on Monday reflected a fresh demand of BJP to set up National Law University in the Jammu instead of Kashmir. Yes, this is Jammu got both IIT and IIM, where was the talk of equality then. Yeah, that is what BJP is saying. Like Abdullah was like कि Jammu is having this, Jammu is having that. So we should have that and as well. तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर इन सब चीजों के उन्होंने बोला कि भाई यार मिलना चाहिए. So one thing is this, you might get a new NLU in Jammu. चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट वन. यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीजें हैं उसमें सबसे पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है कि जो बेंगलुरु सिविक बॉडी के इलेक्शन है वो 30 जून के पहले हो जाना चाहिए. Right. And Kerala के CM, he decided to go against the center policies for the biasness they are showing. Yes, so जो बात करें अगर तो जो पिनराई विजन है, this is they are trying to like the central is trying to uh, they closed a medical college too. Don't discuss that. I mean, मेडिकल कॉलेज जो बंद हुआ है वहां पे, that is one of the most unfortunate event you can see in India, where there are a very less number of doctors among people, and when some like so-called religious and extremist group decided to go against a medical college just because out of 50, I guess 42 students were Muslims. That is unfortunate. All of them got the admission with merit, with counseling process. They filled their priorities as that college. But again, let's not discuss this. Come back to the point. Uh, what we were discussing. Yeah, Kerala CM says ki the center is trying to hinder with the state progress. They have protested and they have given several particular reasons for this. This is GST distribution is delayed. The
help was delayed, and some other thing, disasters, and other one. So he protested against Home Minister and Prime Minister. Ki this is not right. Then Vijay Thalapathy went to New Delhi, and there was 6 hours interrogation on Tamil Nadu Karur Stampede case. And moving on, the Supreme Court fixes 30th June deadline for Bangalore civic election. Yes, they recorded the that civic election in Bangalore must be completed by June 30, and stress no further extension would be given to conduct the election. Actually, total legislative assembly में बैंगलोर 12.5 सीट्स के साथ वो होती है, स्टेट रेवेन्यू का ओवरऑल 60% करती है, सो सिविक इलेक्शन वहाँ पे जरूरी है. So that is what court said, right? Now let's not discuss, Sahil, what is happening. मतलब people actually celebrated it, and that was not at all welcoming. Let's see. So there were 8 arrested for the SSLC preparation exam paper leak, and somebody was saying that there was no paper leak. Yes, the North Division Cybercrime Police has arrested 8 persons, including 6 teachers, in connection with the SSLC preparatory examination paper leak in Karnataka. They have detained 2 students as well for questioning. So same thing, like paper pehle mil jana, then they start discussing about the पेपर उसके बाद सॉल्व करना. So it's a good thing कि भैया लोग अब जानने लगे हैं. Now this was what we have discussed. Instead of ban, the rooster fight is again like taking place. So during this time, Sankranti period, this particular thing is somehow regular. Like हमने ban कर दिया, but people doesn't care about it. So let's have some particular. Sorry, sorry, yaar. So rooster fighting is coming under the animal cruelty. इसके अंदर आता है वो animal cruelty के अंदर आता है. And animal cruelty is bad. Yes. We have these laws, for example, Prevention of Cruelty to Animal Act 1960. Then we also have Andhra Pradesh Gaming Act in this picture. Andhra Gaming Act, that was 1974, I guess. Yes. And then जो illegal betting होती है वो अलग. Yes, betting is not legal in India. So, whenever we are seeing Sankranti time, like Sankranti is a time period when sun actually starts coming back to the northern hemisphere, and the northern hemisphere will see summer, like the way we are going to see summers and season. विंटर के खत्म होने का एक पर्टिकुलर वो होता है साइन होता है कि now it's moving toward the summers. So during that time this illegal rooster fighting takes place in Andhra and some other regions. Technically it's prohibited under the protection of cruelty against of animal act, and we cannot do such kind of a particular Bhogi. There is a festival known as Bhogi, which is not at all welcome by the laws, and there are a lot of illegal betting as well. Yes, because like come on, पिछले साल तक तो फिर भी जो बेट थी 5 से 15 लाख तक थी, इस बार तो और बढ़ गई. And then there is like bird and their prices वो भी increase हो गई. So it's not at all organized, and illegal. It's illegal. So people somewhere like cultural, what we can say, independence का बहाना देके काम करते हैं कि हाँ यार ये हमारे कल्चर का पार्ट था, so we should do it, but the law doesn't allow it. Right? Yes, according to the laws, rooster fighting is a punishable offense.
under these acts. Right. And Andhra Pradesh High Court recently also directed the state government to enforce the strict ban on this. But still, people do that on the name of culture. चलो आगे बढ़ते हैं, and this was the biggest news for today. India to be invited to join US-led initiative Pax Silica. So, what is Pax Silica? अगर बात करें तो, anyone, what is Pax Silica? Have you heard about it? No one? No? Okay, so let's get into the timeline first. On December 2025, okay, um, India was not invited, and India was not even kind of full-time member or discussed कि they should be India should be member or not. But जो US ambassador to India है, Sergio Gor, he said कि this is like on yesterday he said कि they formally announced that India will be invited to join Pax Silica as a full member in February 2026. Now, what is Pax Silica? अगर बात करें तो it's a US-led multilateral initiative. This is for global, say, like security of a global, what we can say, supply chain, security of a global supply chain of, मैं पॉइंटर लिख रहा हूँ, जो which are very important. Silicon, semiconductors, and AI. Yes. So अगर पैक्स सिलिकॉन की बात की जाए तो इट्स अ यूएस लेड multilateral initiative aimed to secure the global supply chain of silicon semiconductor artificial intelligence. Its objective includes reducing the coercive dependencies. Yes, majority of these things comes from China, so they don't want China to dominate, right? And AI, correct. So they want कि भैया हमारे पास food chain secure हो. They want to have a secure AI infra and shared infra, like share AI, artificial intelligence infra. So between the trusted nation, that hashtag trusted nation is important, and they want coalition and capabilities to further strengthen the this particular security chain. Right. So पहले what this happened was just कि भाई पहले इंडिया को नहीं बुलाया गया था, but then they decided कि इंडिया के बिना काम भी नहीं होगा. Yes, it's known as strategic shift. Yes, like the news itself saying कि India's initial exclusion from the group launched in December 2025. A decision recently described by some official is diplomatic misstep now being corrected to recognize India's role as a reliable and trusted partner in the global value chain. Right? Yes, might have some not so good relations these days, US and India, but a majority of world and diplomats know this point that अमेरिका का काम यू चाइना इंडिया के बिना नहीं चल सकता. Right? हाँ. So this Pax Silica was launched in December 2025. Right? Its founding member includes the US, Japan, Korea, South Korea, Singapore, Netherlands, UK, Israel, Australia, UAE and Qatar. जो अदर पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें इंक्लूड होता है यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ताइवान एंड OECD.
and India becomes one of the formal members as well. And the summit will take place in February 2026. India will be the part of it. So that is what Pax Silica. Now, apart from this, SC questions on Salim's claim having done 25 years behind the bar. The Supreme Court on Monday questioned on the convicted gangster Abu Salim on the logic behind his claim to have completed the quarter century behind the bar in India since arrest in November 2005. Salim, a convicted 1993 serial bomb blast, was extradited from the Portugal. Yes, इसको धरा गया था वहां से. And from then he is behind the bar and he's saying कि भैया आप 25 साल सर्व कर चुके हैं तो अब हमें छोड़ देना चाहिए नहीं लाइक कि डू योर कैलकुलेशंस आर रॉन्ग है ना 25 साल नहीं होते 2005 से 2025 सो चुपचाप बैठे रहो राइट हाँ एंड द फोन सोर्स कोड फ्रॉम लाइक डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था दैट इज अगेन इन न्यूज जो डिस्प्यूट जो है उसके ऊपर वो कर रहा है एंड उसके बाद की बात करते हैं देयर इज अ न्यूज ऑन रोहिंग्यंस सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कैसी कहानी है सो अगेन लाइक लास्ट 3 4 डेज से जो ममता बनर्जी एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ईडी ये सब चल ही रहा था तो इसी बीच में जो बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी शी राइट्स टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू फ्लैग फ्लॉज इन एसआईआर प्रोसेस एंड उनका कहना है कि the rules of 2002 were scanned and translated using AI tool. During this, the serious जो errors have occurred. These errors have resulted in large-scale data mismatch, leading to many genuine voter being categorized as logical discrepancy. So she said कि you should have a proper method of SIR and you should correct your method. Then the former Navy chiefs जिन्हें SIR notice मिला था इलेक्शन कमीशन ने उन्हें clarify किया कि it was a system driven procedure. It has nothing to do with his identity or citizenship. Yeah. Ahead of budget, Congress raises concern over physical federalism and inequality. This is something जो थोड़ी टाइम से देखा भी गया है कि किस तरीके से चीजें वो हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल वो जो बीबी जी राम जी है राइट विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी कानून एक्ट जो है दैट इज आल्सो समवेयर अभी लाइक फर्स्ट इट वाज अ completely central funded scheme later on it was divided between the state and center and apart from this GST and there are other concerns through which they talk about the fiscal federalism and inequality so if there are state which is ruled by the central government's party, that is BJP, they have been more easy and more what we can say smooth uh, financial mechanism rather than the others which are led by the opposition parties are facing some problems related to this. Yes, उन्होंने कुछ स्पेशल जो पर्टिकुलर पॉइंटर्स हैं उनको भी वो कराया फॉर एग्जांपल ही हाईलाइटेड द बॉर्डर सॉरी ब्रॉडर इकोनॉमिक challenges private cooperation investment right and some other particular things so it was a good thing that the opposition start talking about the budget and how it should be now moving on to the another national news which was good was chaos may happen if Kukizo lawmakers join the Manipur government people still emotional at the council Manipur is still not in good particular condition. We have seen that 2 3 days back, Amit Shah and that we will discuss it. अभी नहीं पहले इसको कर लेते हैं न्यूज़पेपर को एंड आई विल टॉक टू द टीम हो सकता है कि अपन इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दें Let's discuss that Manipur is struggling from last 2 3 years, and that is still struggling. अभी 2 3 दिन पहले we have this discussion in our session as well that Amit Shah is taking consideration of restoring the government in Manipur. For now, it is under the president rule.
राइट सो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर दो कम्युनिटी हैं Maitai and Kuki, these communities don't see each other well. So if the Kuki-Zo lawmakers join the Manipur government, this chaos may happen. That is being said by the council, that is Kuki-Zo Council, right? Let's hope for the best. We achieve peaceful state very soon. Now, Supriya Sule, so NCP Sharad Pawar ki leader, and she said कि India bloc will hold up in 2029 despite the recalibration. So let's hope for the best. We get a strong opposition in 2029, which is very important for the what we can say, a well-functioning democracy. So I didn't wanted to discuss this particular news, but there is a probe under in Parliament against the Trinamool MP who was using the e-cigarette in the Lok Sabha. Yes. So Om Birla on Monday said investigation were underway in complaint. Allegedly, the Trinamool Congress MP who was openly using e-cigarette inside the house during the proceeding. Right, punishment would be strict, and they said ki no one has the right to undermine the dignity and sanity of the parliament. Yes, so this was a complaint from the BJP member Anurag Thakur, who said he was openly using the cigarette, e-cigarette during the proceeding, and उसके बाद ये चीजें हुई थी. Yes, ये भी न्यूज़ है, and e-cigarette is banned in India, so इंडिया में कंटेंट की कोई कमी नहीं होती बच्चे लोग. So we had discussed this about the International Kite Festival and also the it rose to failure from the PSLV missions. So we are not going to discuss much. Now center steps into in as two Nipah virus cases detected in Bengal. So two healthcare workers suspected to be infected with the Nipah virus. Yes, in the Vasat city in the north 24 Pargana district of West Bengal. Nipah virus is again like deadly virus and सेंटर ने अपनी तरफ से हेल्प प्रॉमिस किया है एंड दे वांट कि वो स्प्रेड ना हो सो इट्स अ गुड न्यूज़ दैट दे आर अंडरस्टैंडिंग कि कोविड के बाद किस तरीके की चीजें हो सकती हैं सो दीज वर द स्टेट नेशनल न्यूज़ फ्रंट पेज न्यूज़ लेट्स गो फॉर सम फॉरेन न्यूज़ Alright, I have some particular. Okay, today's editorial is about troubleshooting है ना कि भैया इसरो जो है जिस तरीके से दो PSLV लॉन्चेस फेल हुए हैं उनको किस तरीके से वो करना चाहिए देन CBFC दैट इज सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन उसका और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की बात की गई है yes, there is a debate going on the film जननायकन या थलपति विजय जो पॉलिटिशियन है उनकी लास्ट फिल्म हो सकती है ये सो उसकी बारे में डिस्कशन करते हुए दिस एडिटोरियल टॉक्स and this is a good one make sure to read it why article 6 is a powerful tool for India इसको पढ़ना तुम्हारे लीगल पर्टिकुलर पैसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है so let's move to some other news how Trump is violating international law. I did not need to discuss, but Trump is undoubtedly violating the international law. Yeah, I mean, आप किसी भी जगह पे घुस के उसके प्रेसिडेंट को उठा लेते हो एंड उसको किडनैप कर लेते हो एंड यू सेज कि नहीं भैया ये सब चलता है हमारे यहाँ so that is somewhere that is not good. Yes, अगर मैं यूएन चार्टर की बात करूँ तो यूएन चार्टर भी इस तरीके के थ्रेट एंड फोर्स अगेंस्ट एनी इंडिपेंडेंट नेशन जो है उसको प्रोहिबिट करता है देयर इज एन आर्टिकल 24 जो क्लॉज है यूएन चार्टर का वो इस चीज के अगेंस्ट है सो यस इट इज मिस यूजिंग द पावर एंड उसके बाद द डेटा इज द न्यू ऑयल ये भी एक अच्छा एडिटोरियल है the TCS Tata Consultancy Service third quarter net profit declines by the 14% and to 10,720 crore and this is not right बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी ले ऑफ दिया गया है बिकॉज ऑफ द लॉसेस एंड अदर Delhi High Court refused to interfere with the bank show cause notice to Anil Ambani's son.
Yes, Delhi High Court on Monday refused to interfere on the Union Bank of India's show cause notice. जो अनिल अंबानी है उनके बेटे जो हैं जय अनमोल अंबानी, उनका जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है उसके लिए शो कॉज नोटिस दिया गया था हाई कोर्ट में। उन्होंने अपील की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज कि भैया वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर। Trump. I mean, I'm seeing just Donald Trump in America. So let's discuss this particular thing. I wanted to discuss this. Myanmar made Rohingyas life nightmare. Gambia tells the code in the genocide. Yes. Rohingya crisis is not like a new, almost like it's been 10 years of the Rohingya crisis. The modern Rohingya crisis शुरू हुआ है world में. So there is this particular case in International Court of Justice against the what we can say म्यांमार वर्सेस गाम्बिया, जिसमें जाम्बिया या गाम्बिया जो बुलाना चाहो, रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में बात हो रही है। तो it's a merit hearing on 12th of January. ICJ begins hearing the full merits of the case for the first time. These hearings are scheduled to span 3 weeks, concluding in the late January 2026. So survivor testimonies start हो चुकी हैं एंड फाइनल रूलिंग जो है वो भी आने को है कि भैया लेट 2026 के आते आते फाइनली वो होगी। नाउ व्हाट आर द बैकग्राउंड अगर बात करें तो इन 2017 राइट, म्यांमार मिलिट्री जो है they started a kind of genocide against Rohingyas. So the series of event was something like this: कि the Myanmar military entered into a village where the majority Rohingyas were living, and there was some clash because of which some one or two military personnel died, and then the military, what we can say, strike back with the advanced weapons, and there are like thousands of people from the Rohingya community that died. Right, there are like 1.17 million Rohingyas. They are living in camp, right, and in Bangladesh, Cox's Bazar में, and it's a huge number. मतलब this is something like कि 12 लाख Rohingyans जो है कहीं ना कहीं 11-12 lakh Rohingyans are living in this, and the genocide was something कि जो कहीं ना कहीं गलत था। एलिगेशंस जो है म्यांमार की मिलिट्री में वो ये हैं कि जो 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन है उसका उन्होंने वॉयलेशन किया है ड्यूरिंग द 2017 मिलिट्री कैंपेन इन द रखाइन स्टेट। दे इन्वॉल्व द मास किलिंग, द रेप्स, द erosion, they forced over like a million people to flee to the Bangladesh, and it's not going to end up well. And this case was the case was presented by Gambia under the 57 members of Organization of Islamic Cooperation in connection because Rohingyas are following the Islamic culture. Bihar crime rate declines is a good news. Yes, everywhere जहाँ पे भी crime rate कम होता है वो it's a good news. So make sure कि एक बार 1948 genocide convention जो है उसके बारे में देख लेंगे, रोहिंग्यास की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पढ़ लेना थोड़ा सा। Trump says Venezuela ties working out well considering a meeting with the interim leaders. This guy actually, like, if I'm not wrong, yesterday he posted a photo through social in which he tagged himself as the acting president of Venezuela. Yes, हाँ, एंड रिसेंटली जो अपोजिशन लीडर हैं, जो नोबेल प्राइज विनर हैं, मारिया मशारो, राइट, वो पोप से भी मिले एंड ट्रम्प से भी मिलने वाले हैं। शी ऑल्सो proposed that I should give the Nobel Prize to Trump, but the Nobel body said कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। Yes, so that is happening around the world. And UN genocide hearing start हो चुकी, UN की हम बात कर चुके हैं रोहिंग्यास के लिए, एंड रेस्ट स्पोर्ट्स में तो कुछ नहीं है। So I got some particular questions. I mean, if you are reading the news paper properly, then we are going to have some particular questions. Are the question visible?
यार मेरे को तो मेरी स्क्रीन में तो विजिबल नहीं हो रहे हैं यार, तुम्हें कैसे विजिबल हो रहा है? यस यस यस, अगर मैं चैट बंद कर देता हूँ तो दैट्स विजिबल। ओके, सो देयर आर टू काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक तो फैक्ट्स तो हैं ही अपने क्वेश्चंस में, then if you have read news properly, editorials and other thing, then you must understand the logic behind it as well. तो हमारे पास दोनों चीजें हैं। ओके, इन दोनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन वो मिलेंगे, एंड वी विल रिफाइन इट, what we can do, how we can do. So first question is, India's retail inflation remaining below RBI lower comfort level, relevant to which constitutional principle? So options are separation of power, fiscal federalism, economic governance under the directive principle, or judicial review. टेल मी, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो आरबीआई के लोअर कंफर्ट लेवल से कम है, इट इज रेलेवेंट टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल? सेपरेशन ऑफ पावर, फिस्कल फेडरलिज्म, इकोनॉमिक गवर्नेंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और जुडिशियल रिव्यू? दक्ष? ओके, I got one answer, that is C. Sahil is also saying C. Daksh is also saying very correct. Economic governance under the directive principle, this is the particular thing जो govern करती है आरबीआई and other particular working bodies को. Moving on to the next one, RBI inflation target framework is based on which statutory authority? आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क है वो किस संवैधानिक बॉडी के अंडर बनाया जाता है? ऑप्शंस आर फाइनेंस एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट? ओके, दक्ष का कहना है बी, मिस टी का कहना है डी, साहिल का भी कहना है बी। एनीवन? यस, द करेक्ट आंसर शुड बी बी। रिजर्व बैंक का एंटायर प्रोविजन, रिजर्व बैंक का एंटायर वर्किंग जो है वो 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से आई है, एंड इट वाज established in 1935. So whether that is inflation framework or a monetary framework, everything goes with that particular act. Okay, moving on to the third one. Supreme Court's observation that bail is the rule, jail is the exception, is rooted to which constitutional provision? राइट? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि बेल नियम है और जेल एक्सेप्शन है, इज रूटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन से रिलेटेड? ऑप्शंस आर आर्टिकल 14, 19, 21, 32। बताओ। दक्षिण आर्टिकल 22, राइट टू लाइफ लिबर्टी। साहिल का भी कहना है सी। ओके, सी अनदर मिस, एफटीआई मिस 0, एफटीआई 3, एनी अदर वन? Yes, the correct answer should be option C, that is Article 21, right to life and liberty, personal liberty. Yes, this is the provision जिसके थ्रू कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि bail is the rule and jail is exception. Okay, next question. In cancelling the bail in POXO case, the Supreme Court prioritized which factor? Supreme Court कौन सा factor prioritize करता है while cancelling the bail in the POXO case? The presumption of innocence, speedy trial, victim safety and trial sanctity, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑटोनॉमी? बताओ, बेल कब कैंसिल की जाती है पॉक्सो के केस में? व्हाट आर द ग्राउंड्स? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज विक्टिम सेफ्टी। यस, विक्टिम सेफ्टी एंड ट्रायल sanctity जो है, दैट इज द रीजन कि जब पॉक्सो केस में बेल कैंसिल करती है सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखने की चीज। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. The ICJ hearing against the Myanmar regarding Rohingyas are primarily related to
वायलेशन ऑफ विच इंटरनेशनल कन्वेंशन? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार के अगेंस्ट रोहिंग्या से रिलेटेड हियरिंग हो रही है, वो किस इंटरनेशनल कन्वेंशन का वायलेशन है? ऑप्शन है जेनेवा कन्वेंशन, जेनोसाइड कन्वेंशन, रिफ्यूजी कन्वेंशन या आईसीसी रोम स्टैट्यूट। क्या अभी डिस्कस किया था क्या? इसका आंसर भी नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी करो। ऑब्वियसली वी डिस्कस की भैया जो 48 का जेनोसाइड कन्वेंशन है उसको वायलेट करता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टॉपिंग एडवांस डिस्पर्सल ऑफ लाडली लड़की बहन स्कीम was based on which legal doctrine? इस टाइप की स्कीम जो इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टॉप कर देती है, रोक देती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिया, वो किस डॉक्ट्रिन के अंडर आती है? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉमिसरी स्टॉपल या लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन? ये तो बहुत इजी पड़ेगा यार। यस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो पर्टिकुलर टूल है जो किसी भी तरीके के, राइट, हो सकता है, हो सकता है, किसी भी तरीके के पर्टिकुलर वुड बिगिन से लालच या अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकती है। फॉर एग्जांपल, इफ there is a state election and some scheme is giving like 5,000, 8,000, 10,000 rupees to individual voters on the name of certain scheme, it's being transferred to their account, it's an like unfair practice. So model code of conduct इसी unfair practice को वो करती है. So you cannot disperse alcohol, rupee, money, more precisely, or any other kind of gift for getting votes. That is model code of conduct, right? Question number 7. Which constitutional body enforces the model code of conduct during election? Right? इनमें से कौन सा बॉडी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के टाइम पे इन्फोर्स करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, फाइनेंस कमीशन? बताओ। कंफ्यूज? स्टेट इलेक्शन कमीशन। यस मित्रों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाती है, बताती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उनको इन्फोर्स करते हैं कि भाई ये पूरा फॉलो होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर स्क्रैपिंग द बीएमआईसी प्रोजेक्ट मेनली ड्यू टू वायलेशन ऑफ विच प्रिंसिपल? राइट, कौन से प्रिंसिपल के थ्रू कर्नाटका हाई कोर्ट ने बीएमआईसी का प्रोजेक्ट जो है बैंगलोर मेट्रो का, उसको स्क्रैप डाउन किया है? नेचुरल जस्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव? एक एक करके अपन क्वेश्चन करते हैं ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, वेरी करेक्ट। भैया लंबा टाइम लग रहा है आपको, 1 1 किलोमीटर बनाने में 5 5 7 7 साल 20 साल लग रहे हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट। सो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगेंस्ट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी अगेंस्ट है, सो दैट इज बी। Rooster fighting is being a punishable offense under the law is primarily governed by which statute? So, rooster fighting जो है वो punishable offense है किस law के अंडर? Right? Options are Wildlife Protection Act 1972, Indian Penal Code, Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 और Environment Protection Act 1986। बात कर चुके हैं, मुझे जल्दी से आंसर दो।
दिस वाज इजी ना, अपन ने डिस्कस भी किया है। ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट। वैसे तुम दोनों ही रो रहे हो, साहिल और दक्ष। मेरे को लगा कि ये हंसने वाली इमोजी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट फिक्सिंग अ डेडलाइन इन बेंगलुरु civic election strengthen which constitutional mandate? राइट, यस। सुप्रीम कोर्ट का बेंगलुरु सिविक इलेक्शन का डेडलाइन फिक्स करना किस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को क्या करता है, कहता है, स्ट्रेंथ देता है? ऑप्शंस आर जुडिशियल सुप्रीमेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द पार्ट 9A, इमरजेंसी पावर या यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट। इजी है ये। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द पार्ट 9A, है ना? वेरी करेक्ट गाइस। The assurance given by India to Portugal in Abu Salim expedition relates to which constitutional power? जो इंडिया ने पोर्चुगल को अश्योरेंस दिया है अबाउट दी अबू सलीम एक्सपेडिशन, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की अश्योरेंस देता है? The options are Article 161 Governor's Pardon, Article 72 Presidential Clemency, Article 226 the writ jurisdiction और Article 136 Special Leave। बताओ। B, I guess. So B, I, लिखा हुआ। I thought this is a post in police or some other brotherhood in like. um, the correct answer is presidential clemency. Yes. कि भैया प्रेसिडेंट के भी जो वो है आर्टिकल 72 जो है प्रेसिडेंशियल क्लेमेंसी, उसका भी अथॉरिटी जो है उसका भी राइट दिया जाएगा सलेम को, अबू सलेम को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनिंग सलीम्स क्लेम हाईलाइट विच लीगल प्रिंसिपल? जो अबू सलीम का क्लेम था कि उसने क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी जो है जेल में बिता दी, वो किस पर्टिकुलर लीगल प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है? ऑप्शंस आर एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ, डबल जेopardy या रेस जुडिकेट। बताओ। ज्यादा लीगल हो गया क्या? भारी भारी वर्ड है क्यों इसमें? हम्म। श्योर डबल जेopardy होगा। कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ होगा। द करेक्ट आंसर शुड बी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑन ऑफ क्रिमिनल लॉ। राइट, यस। मूविंग ऑन टू द लास्ट थ्री क्वेश्चंस। लीगली आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक whenever there is a criminal who try to get bail or something like this, right? Supreme Court has a right to question the claim, और ये कहलाता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑन द क्रिमिनल लॉ, कि भाई जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज हैं उस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, यस करना पड़ता है।
Now, moving on to the next one, the invitation to India to join Pax Silica is significant for which area of international cooperation? बहुत इजी सा है, सिंपल सा बताओ कि भैया इंडिया को बुलाना पैक्स सिलिका में किस एरिया ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करता है? क्लाइमेट चेंज, सेमीकंडक्टर इन एआई, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स। तो इजी है यार, ये तो अपन ने डिस्कस किया है। B, this is about semiconductor, silicon, and AI governance, Pax Silica. Moving on to the question number 14. The Kerala CM protest, releasing the denial of fundraisers issue linked with which constitutional mechanism? राइट, जो केरला सीएम का प्रोटेस्ट है, डिनायल ऑफ फंड रेजिंग, है ना, वो किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का एग्जांपल है, लिंक है? ऑप्शंस आर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, द इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, जीएसटी काउंसिल्स। यस, वेरी करेक्ट, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। Last question for today. The Supreme Court seeing a reinstatement of judge accused of misconduct reinforces which principle? The Supreme Court staying reinstatement of any judge accused of misconduct reinforces which principle? Yeah, right. The options are judicial independence without accountability, doctrine of pleasure, judicial accountability in public confidence, contempt of court. बताओ। See, majority of you see, बच्चे जोनल काउंसिल्स इंडिया की एडवाइजरी बॉडीज होती हैं, स्टैच्यूटरी, जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की उससे बनी थी, राइट? एंड मतलब दे हैव लाइक देयर ओन फंक्शन एंड लाइक पर्पस। फॉर एग्जांपल, जैसे यूपीएससी की जोनल काउंसिल अलग होती है, प्रमोट करना उनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें उनके काम होते हैं। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये, एंड इनका मेन काम यही है कि वो डिस्प्यूट्स वगैरह जो है उनको रिजॉल्व करें, जो भी पर्टिकुलर चीजें बन के आती हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर शुड बी सी, पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। यस और नो? So, this was today's newspaper that you should read and we should read, and we both read. Clear? So, I hope you guys are enjoying the pattern कि हम सबसे पहले अपना जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ का सेगमेंट होता है, कि आज के पेपर में इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, then we discuss some of the important news, right? And then we go for questions. So I hope you guys enjoying this pattern. Yes or no? Right? In case you have any particular, thank you, Daksh. If you guys have any particular suggestion, मैं comment box पढ़ता हूँ। तो हाँ, हाँ, तो तुम्हें अगर ऐसा कुछ लगे तो तुम बिल्कुल शेयर कर सकते हो कि मुझे ऐसा कुछ सोचने में आ रहा है, so that we can discuss further कि हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा, right? So this is it from my side for today. I hope you guys enjoyed this session. I'll see you in the next like tomorrow. Till then, make sure कि लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो, and good day everyone.